Hello everyone, welcome to BISWAL'S chemistry. Myself Kausik Biswal, and in this lecture I am going to discuss about the next topic of the chapter chemical bonding, that is your characteristics of ionic compounds. Okay, तो आज हम लेक्चर डिस्कशन करेबा हमर जो ionic compound गुडांकर कोन हमर characteristics. Okay, चलो लेट न करी देखिबा हमर फर्स्ट characteristics कोन अछि क्लियर ना नै हमर जति को ionic compound गुडा रहले तमर जनरली हार्ड समान सॉलिड स्टेट रे रहंदी आ समान कोन ना तमर हार्ड क्लियर नुहे लुण एग्जांपल लुण नै जाओ लुणटा तमर हार्ड नो यस से को स्टेट रे रहउची सॉलिड स्टेट रे ताल मेजॉरिटी तमर जति आयोनिक कंपाउंड गुडा को समान सब को स्टेट रे रहंदी ना सॉलिड स्टेट रे रहंदी क्लियर आ सॉलिड स्टेट रहले माने से माने कोन तमर हार्ड क्लियर ना नै ताल फर्स्ट पॉइंट हम लिखिबा एक नंबर पॉइंट ionic compounds are generally hard and having high melting point and boiling point and having high melting point and boiling point. ओके सेकंड पॉइंट लिखिबा आ तमर जति आयोनिक कंपाउंड गुडा को से माने तमर सॉलिड स्टेट रे इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करंती लुण भीतर तमन जति इलेक्ट्रिसिटी की पास करे सॉलिड अवस्था रे से तमर इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करिवनी किंतु ताको जमे लुण पानी करतबा एक्यू स्टेट रे ता भीतर देखि इलेक्ट्रिसिटी की पास करेबा से तमर कोन करिवो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करिवो ना ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री आयन चला जब खाली लुण को मन कर खाली ओडी लुण अछि ओके आ भीतर NaCl अछि तमे ता भीतर गोटे पॉजिटिव तार गोटे नेगेटिव तार गेंदिलो इलेक्ट्रिसिटी पास करलो ताको छुईबो देखिबो करंट मारिबोनी आ टिके आजरे पानी ऐड कर देकी लुण पानी कर दबो लुण पानी कर देले कोन होबो ना आ भीतर तमरे भांगीबो Na+ और Cl- तमना भीतर से फ्री आयन प्रोड्यूस करिवो जदि फ्री आयन प्रोड्यूस कला ताल से कोन करिवो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करिवो ना नै त लिखिबा सेकंड पॉइंट ionic compounds do not conduct electricity in solid state but conduct electricity in aqueous or molten state भी लिख परियो in aqueous or molten state due to the formation of free ions. Okay, due to the formation of कौन free ions. Okay, third point, ionic compounds are brittle in nature. Ionic compounds are brittle माने भंगुर क्लियर ना नै are brittle in nature. Okay, fourth point, these are non-directional बुझे भी non-directional कौन these are non-directional अच्छा मते कहला जो आयोनिक कंपाउंड हमर फॉर्मेशन होजी गोटे पॉजिटिवली चार्ज आयन और नेगेटिवली चार्ज आयन भीतर अट्रैक्शन होजी ना सपोज मानिनो एटा गोटे पॉजिटिवली चार्ज आयन क्लियर ना ओके हमर जो नेगेटिव टा आसीबो से जे कोन से डायरेक्शन में आसुना काई की से तमर अटैक करि परिबो ना करि परिबोनी ये सब कोर्स करि परिबो ता माने ये पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करिया पे हेले तार सेमदी कोन से दिग न थाए क्लियर ना आ तार दिग न थाए बा तार डायरेक्शन न थाए ताको तमर कोन कह जे नॉन डायरेक्शनल क्लियर ना तार जति आयोनिक कंपाउंड गुडा अछंती तमर प्राय तो समान सब गुडा कोन नॉन डायरेक्शनल क्लियर ना ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिबा 5 नंबर पॉइंट
they produce cracking sound, on hitting. ओके ସେମାନେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୁଣକୁ ମାନଙ୍କର ନିଆର ନେଇକି ପକେଇଦେଲ ସେ ତମର ଚଡଚଡ ଚଡଚଡ କରିକି ଫୁଟିବ ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ରାକିଂ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ନା କ୍ଲିୟର କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ ଆମର କ୍ରାକିଂ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ନା କ୍ଲିୟର ଯୋଉ ଦିୱାଲରେ ଯୋଉ ବାଣ ଫୁଟଉଛ ଯୋଉ ଝରଝରିଆ ବାଣ ଫୁଟଉଛ ତାକୁ ତ ନିଆର ଲଗଉଛ ସେ ଚଡଚଡ ଚଡଚଡ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ନା ସେଟା ଆମର କୋଉ ସାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ କ୍ରାକିଂ ସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ନା କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ ଓକେ very interesting very important point ହେଲା these are soluble in polar solvents like water but insoluble in non-polar solvents like benzene okay benzene type गोटे को कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर ना क्लियर आज वाटर नहीं छ सेला तमरो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्लियर ना क्लियर ताले एमान तमर मुख्यतः पोलार सॉल्वेंट रे एमान सॉल्युबल जे मन कर लूणटा पानी रे पकेबो से सॉल्युबल होना मिले जाए काना तमर वाटर टा गोटे पोलार सॉल्वेंट